Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss paper 2, May-June 2022 to 1. Today we are going to discuss presentation task number 6. Okay, you are going to create a short presentation. All slides must have a consistent layout and formatting. Create a presentation of 7 slides using the file J221. Okay, we have to file this into the Power Presentation. Go to the home and new slides, slides from the outline, and go to your folder. This is the video folder, and go to the May-June 2022 to 1, and the file name is this one. Okay, first of all, your first task is to delete the first slide. Okay. यूज अ मास्टर स्लाइड टू डिस्प्ले द फॉलोइंग फीचर्स. हमें मास्टर स्लाइड को ओपन करना है एंड गो टू द मास्टर स्लाइड व्यू and this is the slide master and select the slide number 1. Okay, automated slide numbers on the top left. We have to insert the slide numbers on the top left, your name, center number and candidate number. Okay, top left पे हमें प्लेस करना है slide number. Go to the insert tab and header and footer. Check on the slide numbers and footer. Footer will be your name and candidate number, and then apply to all. Okay, and top left, this is the page number and I have to place on the top left of the page. Okay, and this is the date. मुझे इसको नहीं चाहिए थी, इसको डिलीट कर दीजिएगा. और ये आपके पास, और इसको हम देख लेते हैं व्यू के अंदर जाके, नॉर्मल व्यू. एंड दिस इज द पेज नंबर. लेट्स ओके. एंड ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इसका फुटर है. ठीक है, ओके फाइन. द नेक्स्ट पॉइंट इज master slides items appears in the same position on every slides. Let's okay. No items overlap on any slide, it will be fine. And the next point is 24. Format the first slide so that a title slide layout is applied with no bullets. Go to the first slide और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास बुलेट्स नज़र आ रहे हैं. इसको हमने टाइटल स्लाइड पे लेकर जाना है. नाउ गो टू द लेआउट and it will be converted to the title slide. Okay, the next point is the title and subtitle text are centered in the middle of the slides. It is fine क्योंकि हमारे पास जो बुलेट्स हैं बिल्कुल कोई बुलेट्स नहीं है इसमें, और ये हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है. And the next point is delete the slide with the title सीक्रेंट्स. सीक्रेंट्स के नाम से जो हमारे पास स्लाइड है इसको हमने डिलीट करना है. सीक्रेंट्स, दिस इज अ सीक्रेंट्स. राइट क्लिक करें इसके ऊपर और राइट क्लिक करने के बाद इसको डिलीट स्लाइड कर दें. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज द डाटा इन द फाइल weather to create a vertical bar chart. Okay, we have to open the file weather. Go to the folder, and where is the weather folder? This is the weather folder. And this is the Excel sheet. Okay जी. Okay, next. To create a vertical bar chart, this chart must compare only the air temperature high and air temperature low values for only the months May, June, July, August and September. I need May, June, July, August and September. Okay, the remaining data will be deleted. It is from May. Okay, and we have to delete this data, and we also hide this data. Or
this is the temperature low and this is the temperature high। ओके जी, हमें यही वाला डाटा रिक्वायर्ड है और इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए वर्टिकल बार चार्ट हमें क्रिएट करना है। वर्टिकल बार चार्ट क्रिएट करने के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद आप वर्टिकल बार चार्ट पर आ जाएंगे तो ये हमारे पास एक वर्टिकल बार चार्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज लेबल द चार्ट। इसका टाइटल जो है एवरेज समर टेम्परेचर्स होना चाहिए। जस्ट आप इसके टाइटल पे जाएं और यहाँ पे इसका इंसर्ट कर दें, इसको कंट्रोल भी कर दें। फाइन, द नेक्स्ट पॉइंट इज वैल्यू एक्सिस टाइटल C, okay, and the category axis is month। we have to open the axis title, यहाँ पे हमारे पास C आ जाएगा एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, मंथ्स आना चाहिए। ओके, क्रिएट होने के बाद द नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्प्ले द फॉलोइंग ओनली द डाटा वैल्यूज एट द टॉप ऑफ ईच बार। जस्ट गो टू द स्लाइड्स, आप इसकी बार्स पर जाएं, इसको क्लिक करें, जब ये सिलेक्ट हो जाएं जस्ट गो टू द प्लस टैब एंड वहाँ पे आप डाटा लेबल्स को क्या कर देंगे, चेक कर देंगे। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो शो होना शुरू हो गई हैं। इसी तरह अगर इनके ऊपर से हम बात करें तो डाटा लेबल्स, इनके ऊपर भी हमारे पास वैल्यूज़ डिस्प्ले हो गई हैं। ओके, legend showing air temperature and high level low temperature, that is fine, ये हमारे पास पहले से डिस्प्ले है। ओके, फॉर्मेट द वैल्यू एक्सिस स्केल टू डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू 0, 32 एंड 4। तो बहुत ही आसान है, इसका क्या करना है आपने, जस्ट इनकी टेम्परेचर की वैल्यूज पे जाना है, डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक्सिस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 0 थी एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 32, यहाँ पे आप 32 कर देंगे। और इसके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात की जाए तो इंक्रीमेंट हमेशा 4 है, तो 4 के लिए आप यहाँ पे मेजर पे आएंगे और यहाँ पे 4 कर देंगे और जस्ट एंटर करने के बाद आपके पास ये चार्ट्स में चेंजिंग हो जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये हमारे पास पॉइंट क्लियर हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेस द चार्ट टू द लेफ्ट ऑफ द बुलेट ऑन द स्लाइड्स विद द टाइटल क्लाइमेट। क्लाइमेट के अंदर हमें इसको प्लेस करना है, पहले इसको हम कंट्रोल C कर लेंगे कॉपी, और इसके बाद हमें क्लाइमेट्स में जाना है। क्लाइमेट्स में जाके बाद इसको हमने लेफ़्ट साइड पे इसको प्लेस करना है, तो आप यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे और यहाँ पे हमारा पास पेस्ट हो जाएगा इसका चार्ट। कंट्रोल प्लस V करने से या आप राइट क्लिक करेंगे वहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका चार्ट प्लेस हो गया। नो वर्ड्स इन द चार्ट आर सेपरेट, ऑल डाटा एंड लेबल्स आर फुली विजिबल। चेक कर लेते हैं कि हमारे पास डाटा तो सारा डाटा विजिबल हो रहा है। डन, ओके फाइन। द चार्ट एंड इट्स कंटेंट डू नॉट ओवरलैप एनी स्लाइड आइटम्स। इसका चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, इसके साथ कोई ओवरलैप नहीं हो रहा। डन। प्रिंट ओनली दिस स्लाइड एज अ फुल पेज स्लाइड इन अ लैंडस्केप ओरिएंटेशन, ये भी हो जाएगी। अगर नेक्स्ट है ऑन द स्लाइड विद द टाइटल wind and tides location, the two bullets describe the Bora and Sirocco winds. Format only these two bullets points look like as this. ओके, हमें ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये ऐसे दिखने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ गया winds and tides पे, तो ये दो पॉइंट्स जो हैं ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दिखने चाहिए। तो अगर हम इसको यूँ कर लें और यहाँ से हम इस पॉइंट पे जब क्लिक करने के बाद हम इसके नंबर्स एंड बुलेट्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे कस्टमाइज पे आने के बाद यहाँ से आप ये वाला इसको सिलेक्ट कर लें, ओके कर लें, तो आपके पास वो आ जाएगा। इसको ओके करने के बाद ये आपके पास लुक लाइक एज हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास वैसे दिखना शुरू हो गया। डन। सेव दिस प्रेजेंटेशन, प्रिंट द प्रेजेंटेशन एज हैंड आउट्स विद 2 स्लाइड्स ऑफ पेज, ईच साइड फिलिंग हाफ ऑफ द पेज। तो हमारे पास जस्ट आपने क्या करना है, इसको प्रिंट पे जाना है। प्रिंट पे जाने के बाद आपने प्रिंट करने के बाद आपने हैंड्स आउट करना है। हैंड आउट्स पे हमारे पास इसको 2 स्लाइड्स पे करना है और ये हमारे पास हैंड आउट्स आ गए और इसको जस्ट प्रिंट करने के बाद आपकी ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।